अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी स्टडी पर पूरा फोकस कर रहे होंगे। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप सब जानते हैं कि अब आप लोगों की डेट शीट अपलोड कर दी गई हैं। डेट शीट का ऐलान कर दिया गया है, नोटिफिकेशन भी बाकायदा जारी कर दी गए हैं पंजाब बोर्ड की तरफ से। अब आपके एग्ज़ाम्स बहुत नज़दीक आ चुके हैं और मुझे उम्मीद है कि आप तमाम स्टूडेंट्स ने अपनी बुक्स का प्रॉपर मुताला कर लिया होगा, उनको अच्छे तरीके से देख लिया होगा। आपको एक ऐसे गेस्ट पेपर की ज़रूरत है जो कि आपके एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम हो, उसमें बहुत रिपीटेड क्वेश्चंस हों, बार बार रिपीट हुए हुए हैं क्वेश्चंस हों। डियर स्टूडेंट्स, आज ही इसकी वीडियो के अंदर मैं आपके साथ 9th क्लास केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट एसएलओ की बना पर तैयार किया हुआ गेस्ट पेपर शेयर करूंगा। इसको देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी हुई है और कितनी बाकी है। स्टूडेंट्स, इस गैस पेपर को अपनी तैयारी का ऐसा लाजिम बनाइएगा। पेपर होगा तो आप देखेंगे कि इस गैस पेपर में से बहुत सारे सवाल आपके पेपर में पूछे जाएंगे और आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। थोड़ी लंबी हो जाएगी कि एक एक सवाल पढ़ना पड़ेगा और आपको समझाना पड़ेगा। और गैस पेपर को या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या इसको नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि आपको ये बोले ना आप और इसके मुताबिक तैयारी कर सकें। चैप्टर नंबर 1 है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। इसमें चैप्टर क्वेश्चन नंबर 1 है डिफाइन इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री। दूसरा क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। गिव द स्कोप ऑफ बायो केमिस्ट्री। डिफरेंस बिटवीन आयन्स एंड फ्री रेडिकल्स। डिफाइन वैलेंसी, राइट द वैलेंसी ऑफ Na। डिफाइन फिजिकल प्रॉपर्टीज विद 2 एग्जाम्पल्स। डिफाइन कंपाउंड, गिव एग्जाम्पल। डिफाइन empirical formula with an example. Define mole, give an example. Define elements, define mixture with an example. What is compound and element? Define relative atomic mass and its SI unit. Difference between molecular mass and formula mass. How does homogeneous mixture differ from heterogeneous mixture? What is difference between atomic number and atomic mass number? Define Avogadro's number. Which one has more molecules, 9 gram of water or 9 gram of sugar? Difference between homoatomic and heteroatomic molecules. नंबर 1 के शॉर्ट क्वेश्चन जो आपने देखे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि लास्ट में मैं आपको के साथ इस तमाम चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी शेयर करूंगा और उसके इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल भी लाजमी शेयर करूंगा। इसके बाद चैप्टर नंबर जो 2 है, इसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। डिफरेंस बिटवीन शेल एंड सब शेल विद एग्जांपल। डिफेक्ट द रदरफोर्ड मॉडल। 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज। डिफाइन आइसोटोप्स। इन शॉर्ट क्वेश्चन को देख कर आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये गैस पेपर कितना अहम है और किस तरह ये तैयार किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन हैं इन गैस पेपर में। व्हाट इज़ मीन्ट बाय रेडियो कार्बन डेटिंग? व्हाट इज़ द आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन? डिफाइन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। एनी टू postulate of Bohr atomic theory. What is meant by quantum and quanta? Compare Rutherford atomic theory and Bohr atomic theory. What is isotopes is used for skin cancer? What are canal rays? What is maximum capacity of shell? Define nuclear fission reaction. How many subshell are there in second shell? Write the electronic configuration of electron having 11 electron. Give 2 observation of Rutherford experiment. चैप्टर नंबर 3 है पीरियाडिक टेबल एंड पीरियाडिसिटी प्रॉपर्टीज़। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं। वाई शेल्डिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेक बाय पीरियाडिक फंक्शन? व्हाट इज मीन्ड बाय ट्रांजिशन एलिमेंट्स? डिफाइन पीरियड एंड ग्रुप। डिफाइन आयोनाइजेशन एनर्जी। व्हाट इज शेल्डिंग इफेक्ट? वाई एंड हाउ आर एलिमेंट अरेंज्ड इन 4th periods? डिफाइन एटॉमिक रेडियस। Trend of ionization in group and period. Define electron affinity. Give the trend of ionization in period. Why are noble gases are not reactive? Why the elements are called S and P block elements? What do you mean periodic functions? Difference between modern and Mendeleev periodic law. How many elements are placed in 4 period? Define group and period in a periodic table. What are transition metals? Give the reasons for the increase electron affinity in period. Define electronegativity. डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो, अगर आपको ये गैस पेपर इंतहाई अहम नज़र आ रहा हो तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 4 की जानब। इसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। व्हाट टाइप ऑफ covalent bond is formed in n molecule? What is ionic bond? How it is formed? What is metallic bond and how it is formed? Difference between donor and acceptor? What is bonding electrons?
What is the relationship between electronegativity and polarity? What does ice float in water? Ionic compounds are solid justify. Why have water polar covalent bond? Difference between polar and non-polar covalent bond. What is coordinate covalent bond? Difference between lone pair and bond pair of electron. Define ionic and covalent. HCl has dipole-dipole forces of attraction. Covalent in H2 in non-polar. Why? What is dative covalent bond? Types of covalent bond are very important. Relation between electronegativity and polarity. Metals are good conductors of electricity. Why? Difference between inter and intramolecule forces. दोस्तों ये थे चैप्टर नंबर 4 के शॉर्ट क्वेश्चंस। ये अगर आप ये शॉर्ट क्वेश्चंस को भी और आप जो आपकी एक्सरसाइज में शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं दोस्तों, जो एक्सरसाइज वाले शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं वो भी लास्ट में जो गिवन होते हैं चैप्टर्स के, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको लाजमी आपने करना है। और उसके जो MCQs होते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री में ऐसा होता है कि 40 से 50% जो क्वेश्चन होते हैं वो आपकी एक्सरसाइज में से ही आते हैं। तो आपने एक्सरसाइज वाले शॉर्ट क्वेश्चंस और 80% जो आपके MCQs हैं, 80% आपके MCQs वो भी एक्सरसाइज में से ही पूछे जाएंगे। आपने शॉर्ट क्वेश्चन जो एक्सरसाइज में होते हैं और उसके MCQs भी लाजमी से कर लेना है, तो आपका पेपर आसानी से हल हो जाएगा। चैप्टर नंबर 5 है फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। व्हाट डू यू मीन बाय evaporation and how it is affected by surface area? Define effusion and give an example. Define pressure and write its unit. Define standard or atmosphere pressure, also unit. State boil law. What is difference between evaporation and boiling point? Write down the two uses of allotropy. What is meant by dynamic equilibrium? What are effect of temperature on evaporation? Define Boyle and Charles law. Define vapor pressure. Difference between evaporation and boiling point. Define absolute zero. Define melting, freezing and boiling point. Define condensation. चैप्टर नंबर 6 है, उसका नाम है सॉल्यूशंस। इसके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। डिफरेंस बिटवीन सॉल्यूशन एंड मिक्सचर। डिफरेंस बिटवीन सॉल्वेंट एंड सोल्यूट। Define molarity and its SI unit formula. Define molar solution. Define solution with example. Define aqueous, dilute, concentrated, saturated, unsaturated solution. इन तमाम जो solutions हैं इनकी तमाम आपने डेफिनेशन इसी का कर लेनी है। Define solubility. Explain like dissolve force. How molar of NaOH is prepared. चैप्टर नंबर 7 है, इसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं। डिफाइन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन ऑल ऑफ टर्म, कि आप तमाम ने ऑक्सीडेशन रिडक्शन की आप तमाम ये शाखें भी कर सकते हैं। डिफाइन रिडॉक्स रिएक्शन विद एग्जांपल। डिफरेंस बिटवीन वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन नंबर। डिफाइन ऑक्सीडाइजेशन एंड डिफाइन रिड्यूसिंग एजेंट। डिफाइन इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग, वीक एंड नन। डिफाइन इलेक्ट्रोलाइसिस। राइट डाउन यूज ऑफ सिल्वर। Define spontaneous and non-spontaneous reactions. What is electrochemical cell and its type? Define coherence and its IO2 is necessary for rusting. Define electroplating. Define LO. चैप्टर नंबर 8 है, इसके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस भी आप अपनी स्क्रीन पर वाइज तौर पर देख सकते हैं। Name of moderate reactive metals. What are 4 uses of platinum? What are application of silver? What are uses of gold? Name of 4 reactive metals. Why HCF is weak and acid of. इसके बाद इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, ये भी आप अपनी स्क्रीन पर वाइज तौर पर आपको नज़र आ रहे होंगे। इनको भी आपने लाजमी करना है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर मोबाइल में सेव कर लें, ताकि इसको आप बाद में अपनी बुक्स के मुताबिक इसके निशान वगैरह लगा सकें।